रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, सीता राम सीता राम. Alright, this bit is too iconic. I've seen interviews of Shah Rukh and Kajol talk about this. They didn't rehearse this scene too much. It was improvised. And if you look at the acting, the chemistry is so natural. अंजलि हाय जाने वफा हो के बेकरार, बरसों की They don't know whether to hug or handshake. दिल बेबसी में चुपके से रोता है. सारी They're stunned. They come in or they go. मुझे टीना के बारे में पता नहीं था. I'm sorry. कैसे पता होता? तुम तो गायब ही हो गई. घर बदल दिया था. रिश्ते भी बदल दिए थे क्या? जब मुझे मेरे दोस्त की जरूरत थी तुम तो थे ही नहीं. It's so endearing when these two are together on screen. Okay. Good night. It's so awkward. Good night. Good night. गुड नाइट. क्या खबर लाई हो? बहुत बुरी खबर है दादी. हाँ? वो दोनों तो ऐसे बिहेव करे जैसे कि पहली बार मिले. गुड नाइट राहुल. गुड नाइट अंजलि. आइडिया. बस पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी. She's thinking this ain't gonna do nothing. अब आप ही बताइए क्या करे. यस. नहीं छोड़ूंगा तुझे. Stop it! मैंने तुझे इतना ही कहा था कि लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती है और इससे कहा बू, लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेल सकती है. इसने तुमसे सच कहा और तुम इससे लड़ने लगी. राहुल तुम रोज हारते थे. याद करो अंजलि, तुम रोज हारती थी. राहुल तुम रोज हारते थे. नो अंजलि. यस राहुल. She's literally put them in a position where their teenage selves come back up. सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते थे. डोंट कॉल मी चीटर, ओके? That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि चीटर नहीं. Rahul is a she started cheater. again. Cheater, Don't listen to her. cheater. I will kill her. You come. Okay. Okay. Okay, I'm all right. Oh my God. I'm all right, yeah. He literally keeps on comb in his jacket. मैं तुम्हें अभी इसी वक्त चैलेंज करती हूँ. मेरे साथ खेलो. Don't be silly, Anjali. He is a bit better than he used to be. Yeah. Practicing. Yeah. क्यों? डर गए? राहुल? राहुल खन्ना कभी भी किसी से डरता नहीं है. Oh, easy on those snaps, man. We will see. We'll see too. That's like- I think she gets shocked at how good he is. She's like, what? No, you didn't.
it. Oh, you missed that. He's good. Na 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 na. Nah. Hey. Divana, divana, divana. Hey, give it to me. Idiot. Ooh. Oh. You like that? Oh shit. Now she knows how she used to make him feel. Oh! Oh! Hey! ए, खेलना नहीं आता है तो चीटिंग तो मत करो ना. ए, मुझे चीटर मत बुलाओ. Hey, you are a teacher. Cheater. ए, Hey. लड़कियां बास्केटबॉल नहीं खेलती. Hey, give it to me. Yes. Oh, he spoke. Oh, he did, didn't he? Yeah. Ah, okay. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली. बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है. It's like they're dating without dating. खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहाँ हूँ देख तो जरा. That's so weird. That's so trippy to see. I like how they show that that's how she remembers him. The kid was doing faces like. I was literally about to say that to you. बहके बहके मेरे कदम है, ऐसे में तू संभाल तो जरा. They did such a good job of making them look older and younger. ये तो वही दीवाना है. And they're even bringing that youthful energy out of each other. तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ होता है. Oh man. सब मेरे सामने अपनी अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखेंगे. ओके, कम ऑन, स्टार्ट. पास इट डाउन. पास इट डाउन. अंजलि, तुम भी अपनी मम्मी को. I feel for her so much. वही आंखें, वही चेहरा. She's just like you. Oh man. अब मुझे ये परिवार अधूरा नहीं लगता. अधूरा नहीं लगता. How kids? This guy. Cheese. Johnny Lever, what a legend. ओहो, फोटोग्राफ्स हो रहे हैं वो भी मेरे बिना. Albeda? आइए बैठे प्लीज. नो ऊपर थोड़ा ऊपर. ऊपर. He hates her so much. और थोड़ा ऊपर. या. अच्छा. यहाँ बैठ जाओ. You are fantastic, beautiful. Thank you. Cutting her head off, isn't it? To cheese. Constantly. Fantastic. Look, every picture. Hold it, please.
क्या हुआ मिस्टर अलमेरा? समथिंग मिसिंग, कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है? They literally look like a family. बिल्कुल ठीक है, ले लो। 1 2 3 और अब जस्ट तुम दोनों हैं? कर्नल, नो, इट्स रियली। Hey, come on, Anjali. Come on. Look at this mother-in-law. The film makes you forget about him. बहुत प्यार करता है ना उससे। Nah. हाँ. लेकिन मुझे ऐसा लगता है The truth. कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। Don't say that, my brother. Don't feel that way. No, but it's true. It's true. She doesn't love me. ए mother-in-law. नहीं करती ना? अमन, तू पागल हो गया है। My mother-in-law knows it too. Come on। मैं कैसे कर सकती हूँ? अब बोल नहीं सकती। This is cheating. You are a cheater. Close your eyes. Wow. रंगीला। That's right. रंगीला, yeah. That's good. Hey, yeah. बहुत सेक्सी था। It's awkward coming from him. दीदी तेरा देवर दीवाना, ओ दीदी तेरा। हाँ, मम्मी माधुरी, हम आपके हैं कौन? ऐसी कोई फिल्म नहीं है। है पापा है। नहीं, ऐसी कोई फिल्म नहीं है अंजलि। Three words. One minute. Your son is gone mad. How is this? I love you. What? Oh. Oh. I love you. कैसे करेंगे? फिर से करो। No. He's doing it wrong. I love you. I love you. तुम इतना नहीं कर पाए। नहीं कर पाया। Oh God. Come on, get to the barn. पागल हो गए हो क्या? Stupid. हाँ, मेरे साथ। मैं एक जगह लेके जाता हूँ। Take it. Uh-oh. No music. Oh, this film is such a classic, man. The Ring. I love you. I love you. I really love you. Hey, I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. It's like a horror film. राहुल, मैं अंजलि, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था।
एक्चुअली मैं वही बात करना चाह रहा था पर तुम एकदम Oh, shit. Hi guys. Hey, I know you. From where? Ah, telephone man. Yeah. What's up, dude? लेकिन तुम यहाँ इस तबेले में क्या कर रहे हो? Hey, ये तुम्हारी अंजलि है? ये मेरी अंजलि है। और ये मेरी अंजलि है। Oh man. You get that sinking feeling just. सुनो, अपने दोस्त से कह देना कि अगर दिसंबर में शादी नहीं हुई तो मैं बास्केटबॉल से शादी कर लूंगा। बास्केटबॉल से शादी। See you, dude. Okay, dude. He's so likable as well. Like it's difficult to not like him as a character. तुम अपने दिल की बात कह दो अंजलि। कभी कभी दिल की बात कहने से दिल टूट भी सकता है। She admitted it. क्या अंजलि, तुमने मुझे बताया भी नहीं। अमन ने बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। Hey, congratulations. ये सुनकर क्या तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। Ugh, it's so messed. कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। Except he does get it 100 because he feels the same way. क्या हुआ? So good looking. Oh, thank you so much. आपको तो कोई भी मिल सकती है। Please, अमन। please, 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 नहीं। मैं आज रात को ही वापस जाना चाहती हूँ। She's running. She feels like she can't fulfill her mum's dying wish. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। अंजलि, तुमने ये टीना खो दिया था जब वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी। मैं जानता हूं कि तुम और राहुल एक साथ बहुत खुश रहोगे। अमन, अमन, अमन। You both know, man. तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के अख भर आई, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब। Everyone's so upset now. आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। लेकिन अंजलि, बाबा जी ने तो कहा था दिसंबर के पहले कोई तारीख नहीं है। माँ, खुशियां तारीख नहीं, तकदीर लाती है जिसे कोई नहीं बदल सकता। She's running from everything. Well, he's going to decide that he's going to go and tell her, basically. I think he doesn't know what he's going to do just yet. But he just, Something's happening. Yeah. now. He's having a realization. yeah, he just knows that it's all wrong. कहते हैं कि टूटते हुए तारे को देखकर कुछ मांगो तो मिल जाता है। Oh man, she's pleading with her eyes. अंजलि, Oh, bruv, this is tense. अंजलि,
It's like, do you say it? Just say Do it, you it's say so it? Do you not obvious. say it? Don't let eyes just say it all. They both feel like it's too late. जाने वफा हो के बेकरार, पर कभी तूने नहीं ये तब कहा जो अब कहा. Oh, this is so wrong. This is so wrong. She can't do it. समय निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। अंजलि, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दुल्हन को बुलाइए। अंजलि चलो। No, the emotion, man. He looks like he's gonna hit her. He did say, yeah, if you don't marry me on I'll the day, drag I'll you. drag you to the altar marrying. हाथ पकड़ के मंडप ले जाऊंगा, कहा था ना। Oh, This was so sick as well. I remember this. And the first time I watched this in the cinema, I was like, oh, no, you won't pass it, you won't pass it. अमन, तुम जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाहा जो मेरी आंखों में है, और आज मुझे वो प्यार दिखाई दिया है। that's true love. और वैसे भी किसी ने मुझसे कहा है कि मैं तो इतना हैंडसम है कि मुझे कोई भी मिल सकती है। की कह रहे हो? I feel for him as well, but he's a good guy. जाओ। Oh, that's so much better. It rests your heart to know that.
They're so used to being friends, they don't know how to be that intimate yet. True love, man. Beautiful. Oh no! She's got a streak of grey hair now. You did it, baby. Oh, You did that's it. beautiful. That's a 10 out of 10. लड़की बड़ी अनजानी है What a roller coaster of emotions, guys! For a film that came out in 1998, this film still holds up and is strong as well. It delves into so many different relationships, like especially when you have mixed sex friendships. This film, I think, had a big impact on the culture at the time that it came out in. And I remember, like I said earlier, it was like that thing, that Pyar Dosti hai. When Shah Rukh dropped that bloody one-liner, everyone was like, "Oh shit!" It did. It Like, really. oh, It shapes. it made everyone like second guess or second Yeah. think all their relationships with their friends and Absolutely. stuff. I think it really did shape the love of the youth at that time, because I remember it being a big thing in school as well, amongst the, like, you know, especially the Asian community. It's almost two films in one, because like the first half you've got that young love kind of thing, and then in the second half it felt much more like a traditional Hindi film. It gives a really classically modern vibe. It's youthful and it connects with young people, but there's a maturity at the end of it once you finish the story. Also, props, kudos, you know, because that's Karan Johar's first directional debut. The acting, Top notch, Shah Rukh and Kajol's chemistry, unmatched, and the music. absolute bangers that still hit differently. I think one of the few things that makes a great film is a film that you can watch again and again and again. Me personally, I grew up with this movie. It's engraved in my memory and it's so nostalgic to me, and I know it's nostalgic for so many people all over the world as well. Kuch Kuch Hota Hai is timeless. At its heart, this movie is about love, friendship, and second chances. And still, after all these years, I think it still hits you right in the feels. Let us know, guys, what you think about this movie. Put it in the comments. And don't forget to Like subscribe and share, because we here. and we shall see you in the next one. Take care.